going to a university. कौन सा? One in Palwe. CSMU. Sir, bike पे ride कर रहा. रोज़ तो जाता हूँ. चलो, let's start with our work. Where did I give you? National development, correct? Yeah. Right. Now I will stop the writing work. I want you guys to read some. So I will see how you guys are reading perfectly. Got it? I want everyone to go for some. Every bench there is one textbook at least. Yes, just Any bench without the textbook, you come go. Come. See what I mean? Both are having or not? ये बोलता है Textbook. तो बैठो ना जल्दी. Come on guys. I'll allow this person to read. Your name is Divyan. Please. Come on. The idea of development or progress has always been with us. We have Oh yes. Carry on. ये रावणस लिख करते हैं Carry on. from the beginning. No, you continue. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. It's okay. There is a big bench. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving the goals. This is a complex task, and in this chapter we shall make a beginning of understanding development. You will never learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. The same way is the only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. Okay, that's a good reading. Very good. Sympathetic. This person. The name here? Rigid. Yes, Rajit, go ahead. Second read, no problem. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of persons. Table 1.2. Development of goals of different categories of persons. Category of person: landless, rural laborers. Laborers. Development goals, aspirations: more days of work and better wages. Local school is able to provide quality education for their children. There is no social discrimination, and they too can become leaders in the village. So you know who are landless rural laborers? Why they are called as landless? Because they don't have their own land. Can we call them as marginal farmer? Marginal. Who are marginal? Who are working as farmer, who are working as laborer, not on their own farm, but on some other's farm. Boy, to come here. No problem. And then you alone. Then what is his goal? More days of work and better wages. Do you accept? Yes. Out of 365 days in a year, he might not be getting 200 days also. And better wage rate. What is wage rate? If a farmer is getting 10 rupees per day, the next day he is offered 15 rupees per day, he'll be happy. Multiplied by 6 days in a week. Correct? But India में ये per day वाला system बहुत कम है. But you go to any foreign country, they will pay you per hour. Per hour. Like I was offered $25 per hour, but normally the wage rate starts at $40. But then $40, I am not a professional, I am a laborer. I call a carpenter to my home, he works for my house and repair work for 2 hours. And I have to pay him $80 straight. But मुझे लगा मैं भी अपना teaching job छोड़ के मैं भी carpenter बन जाता हूँ. हाँ, some of my American friends told you can become a driver here. I'm like, hey, मुझे driving करना नहीं है. $45 per hour मिलता है. And their trucks are not like our trucks. Monster trucks, and they are 90% are automated. No need to struggle like our trucks. They are generally automated. अपने आप जाता है. Only आपको बैठने का भी तो वो जगह छोटा भी है. Takes you that destination.
बस आपको इंडियन डीएल लेकर आना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस। बोले यार ट्रक चलाने का रहता तो मैं इंडिया में चला देता, इधर क्यों आता? बस इसी के लिए थे। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर हाई क्वालिफाइड, उसे इधर क्या कर रहा है? बोले क्या कर रहा है? 4 साल से गड्डी चला रहा हूँ। अगर तो पढ़ा क्यों मैकेनिकल? वही गलती कर दी पहले से आ जाने है ना। तो फॉर अ लेबरर is per hour wage rate is very important. Yeah. And the next one they say local school is able to provide quality education for their children. Local school मतलब कौन सा रहेगा? CBSE, government school. हाँ, government school. And वो अच्छा का education दे रहा है, तो उसको problem नहीं है. He will not aspire और Ryan International में जाना चाहिए, नहीं चाहिए. Then next, education for that. There is no social discrimination. What is social discrimination? Untouchability, caste system, वो भी नहीं है उसके village में. He's happy. And look at the last one. They too can become the leaders in the village. पंचायत राज इलेक्शन में वो पंचायत काउंसलर बन सकता है. Local municipal election में वो मेयर बन सकता है. Do you think that the labor will complain anything? नहीं ना. मुझे जितना भी मिलता है happy. He doesn't want a Maserati or a Lamborghini car at his house. Well, not here, sir. है ना? And government बोलता है डीजल 2 रुपए का सस्ता और पेट्रोल 4 रुपए का. मेरा बैल तो उसमें नहीं चलता है. I'm so happy sir, पेट्रोल का प्राइस डाउन हो गया. तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों? हमारा तो घास फूस से चलता है. घास फूस से कौन सा चलता? बैल का 2 व्हीलर है. देखो इधर एक व्हीलर उधर एक व्हीलर. तो whatever he is offered, he is happy. Right? So let us see the second class. Come on. Prosperous farmers from Punjab assured a high family income through higher support prices for their crops and through hardworking and cheap labor works. They should be able to settle their children abroad. बस ये पंजाबी का पहला ड्रीम है. अब कनाडा जाएगा है ना. हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते? कनाडा में पढ़ते हैं. ये कौन सा जगह? कनाडा. मतलब कनाडा उनकी जगह है कनाडा. उधर क्या कर रहे थे? तो इधर ट्रैक्टर चलाता था, उधर ट्रक चला रहा है ना. Many people are there. हाँ, in fact I took some flights from Canada and US. English announcement understood, French announcement understood, third announcement is in Punjabi. To see, only he could supply लिया. Then we met at Belgium. All Sardarji community went to Delhi wala flight, and all non-Sardarji came to our Mumbai wala flight. फिर हमारा ये लोग किधर जाते हैं? ये लोग पंजाब का उत्तर है सब people. और उधर बोले इधर से ट्रक मिलेगा पहले फ्लाइट में चढ़. बेल्जियम से दिल्ली आके 9 घंटे का रास्ता है. हाँ, ठीक है. उधर उतरते हैं गड्डी चलाएंगे. So for a prosperous Punjab farmer, he needs minimum support price (MSP). मालूम है? Best price government दे रहा है. And he is getting rich crop, cheap labor. You know cheap labor? उसका गांव में काम करना है. And उसका बच्चा बाहर पढ़ाई करता है. Is there anything he requires? No need. Let us read the other 2 class. Farmers who depend only on rain for growing crops. हाँ, ये आपको fill करना है सर assignment. Second, next. A rural woman from a landowning family. हाँ, a rural woman, but उनका घर पे land है. Next community. Urban unemployed group. अभी शायद आप और मैं, आपको अभी तक पढ़ा नहीं. I'm urban और semi urban है living in अभी मुंबई. But I am unemployed. उसका status कैसा है? Come on read. Blank. अच्छा, that also you have to fill. Next. A boy from a rich urban family. ये भी blank ही है. All forms of luxury. Next. A girl from a rich urban family. Yeah. She gets as much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. बस देखो गर्ल्स का कितना इम्पोर्टेंट है. Pursue her studies that too abroad. इधर हमारा मम्मी हमको 8 बजे 9 बजे के बाद इधर जाने नहीं चाहिए है ना. सर अब्रॉड कैसे? मम्मी भी साथ में सूटकेस में बंद हो जाती है. नहीं चाहिए, मैं इधर ही बंद नहीं होगा. वरना हर 2 दिन में बेटा आप क्या कर रहे हैं? अरे रखो तो सही, पहले फोन में ही सब कुछ कैसे करेगा? आई नीड टू. हाँ जैसे 2 दिन में 2 घंटे. हाँ देखा Sir, every 5 hours my mom calls me. अच्छा इतना तेरे पर कॉन्फिडेंस. So we always believe if the girl is from a rich family, they are ready to send the child to a abroad studies. तुरंत यूपी का SAT प्रोग्राम नीचे ऐड होने लगता है.
study abroad test sponsored by you. तुरंत नीचे एग्जाम्स एंड फिर सर अपना लिस्ट में डालता है टॉप 20 स्टूडेंट्स हैव गॉट इन टॉप यूनिवर्सिटीज लड़का ढूंढते हैं ना रायन यूनिवर्सिटी तो इंसान पढ़ा में है क्या इसीलिए हम लोग सब नहीं डालता है सर मिचिगन डाला है इधर का डाला है उधर का डाला है सर ये सब अब्रॉड अच्छा अब्रॉड है ठीक है so let us see the last one. An Adivasi from Narmada. So there are 4 groups that you have to fill in. Everyone will fill it and show it to me in the next link. Five. I'm sorry, I do not have to do. Let us go for the next person. Good read. Having filled table 1.1, let us now examine it. Do all of these persons have the same notion of development or progress? Most likely. Very good. Just 1 minute. Underline the word notion. Right? Okay, very good. When I use the word notion, anybody will tell me what is the meaning of notion? Progress, idea, right? क्या हो गया सब ठीक है ना? अंदर से कुछ ढीला हो गया क्या है? ठीक है I said the word notion, it is the idea, meaning, concept. अभी मैं आपसे पूछूं freedom का मतलब क्या है? तुरंत बोलेगा दरवाजा ओपन कर। Attendance compulsory नहीं कर। देखो फिर 100% मैं नहीं आ। निकलूंगा तो घर से, but यूपी में नहीं। हाँ? फिर आप freedom चिल्लाते हैं, दरवाजा बंद है, attendance compulsory, ये कौन सा freedom है सर? है ना? फिर मम्मी पूछती है बेटा liberty का मतलब क्या है? मम्मी आप पैसे कब जा रहे बाहर? हाँ, लिबर्टी, फ्रीडम। बेटा फिर खाने के लिए स्विगी है ना? So what does these notions means? Every person has the notion of freedom different. Every person has the notion of liberty different, and it should be different. So we always believe that I cannot say मेरा जो freedom का meaning है वो इसका भी same रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए सर? आपने अपना freedom enjoy किया और हमको आके freedom का भाषण देते हैं, है ना? I cannot see one boy talking with a girl and say ये क्या चल रहा है? No sir. Just mean something. कुछ आगे बढ़ा क्या पूछा? अरे सर प्रोग्रेस ना रिपोर्ट कार्ड को बंद कर दो। और हमारे लड़के तो सर है ना बहुत छोटा चीज है। तो किया है डॉक्टर भाई साहब टेक्स्ट किया तो और हमारे सामने फिर चिल्लाता है ड्यूरिंग माय डेज मैं देर से पढ़ा I was the most disciplined child. प्रिंसिपल से मिलता हूँ and my mother used to praise me. अभी तो चिल्ला रहा मैं बोला जो मैंने कर लिया but आपको करना नहीं छोड़ो. What is this? What? छोड़ना ठीक है but इतना भी नहीं है सर आप जो समझते बोलिए उससे भी आगे है ये क्या है वो आप मत पूछो सर. What does it mean? He or she always doesn't mean the worst thing. There might be some better one also. So I have to have a broader idea. So what is that word? Notion. Notion means my view of understanding. Is it should match with yours? You might be better than me. You might be best than me. And how am I? अब तुरंत लड़का बोलते हैं जनरेशन गैप है. ये कौन सा गैप है यार? मेरे और मेरे मम्मी के बीच में जनरेशन गैप. अगर लड़की ऐसा बोला, अब बोला हाँ बेटा करना क्या? तुरंत मैंने उस लड़की हमारे इधर अभी यही रूम में वो पीटीएम था मिला. मैंने बोला एक काम करो आपका मम्मी और आपका एज डिफरेंस ओनली 2 साल का रहना चाहिए. कुछ भी ऐसा कैसे मेरा मम्मी और मेरे बीच में 2 साल का डिफरेंस रहेगा? बेटा तब जाके जनरेशन गैप कम होगा. अब पापा भी ऐसे कुछ काम करता रहता है. पापा से पूछता हूँ या अमेरिका में पॉसिबल लगता है. मेरा 10th स्टैंडर्ड बच्चा इज राइटिंग लेटर टुमारो माय फादर गेट्स scared. So please give me a holiday of 2 days. Can I write a letter to my teacher and give it to my teacher? कल मेरा पापा का शादी है तो मुझे 2 दिन का छुट्टी दो. तो पापा का शादी तीसरा है ना. मम्मी जो आ रही है उसका तो पता ही नहीं कितना है. But here we follow strict family system. है ना? The notion means idea, understand. Okay, let's go. Each one of them seeks different things. They seek things that are most important for them.
that is, that which can fulfill their aspiration or desires. In fact, at times, two persons or a group of persons may seek things which are conflicting. A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Okay. Do a girl expect this? Are you getting? Oh, she's getting. How about you? I would have her. Also, there is no complications at all. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams. But this may submerge the land and disrupt the lives of people who are The notion of development for an industrialist is development of a dam. But for a villager, dam आने के जैसे river का पानी पूरा अंदर चले. Both wants development, but one person का notion दूसरा person से क्या करेगा? Match नहीं करेगा. As a teacher, I, as a student, you. Both have a notion of study and hard work is different. आप हमेशा बोल सकते तुझे क्या है भाई एग्जाम तो लिखना है नहीं है तो बोलेगा ही बट तेरा पेपर जब मेरे पास करेक्शन के लिए था आई बैंग माय हेड 3 टाइम्स ऑन द वॉल क्यों सर मेरे ही आंसर मेरे पास कितना तोड़ मरोड़ के आता है तो लड़का पर से चैलेंज भी करता है एक वर्ड भी नहीं छोड़ा सब कुछ लिखा है फिर मैं अपना बुक लेके गया हां सर थोड़ा वर्ड नहीं थोड़ा लिख दिया पर तुरंत लड़का यही बोलता सर क्रिएटिविटी आप ही ने बोला आंसर में ऐड करो मतलब बेटा आंसर ऐड किया बट दूसरा आंसर ऐड किया तो आप क्वेश्चन चेंज करो व्हाट डज इट सिंपली मीन बच्चा वांट्स मार्क्स बट एनी बट बच्चे को लगता है दिस इज द बेस्ट आंसर बट मुझे लगता है दिस इज द वर्स्ट आंसर छोड़ो सर मैनुअली करिए 4 मार्क्स का 1.5 मार्क्स दे दो सर आधा मार्क्स हैंड राइटिंग कीजिए कैन यू बार्गेन विद द स्टूडेंट्स चलो सर आपने इन द बोर्ड एग्जाम वो देख ले. So here I am saying the notion of freedom is different to different person. Disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their So land. इन दोनों के बीच में solution हो रहा है. क्या solution हो रहा है? बड़ा डैम मत बनाओ. Check dams बनाओ. Check dam मतलब only during rainfall वो डैम रहेगा. बाकी टाइम वो डैम नहीं रहेगा. ठीक है? Excess rainfall का टाइम हमारा विलेज भरने से अच्छा डैम बना लो. And during the dry season, the dams will be removed. So that dam is called as check dams. Okay, go ahead. So two things are clear. One, two persons can have different developmental goals. And two, what may be developmental for one may not be development for the other. Do you accept this? Can you give me any real life example आपका लाइफ में मम्मी बोलता है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी डॉक्टर बनेगा पापा बोलते नहीं इंजीनियर पर हमारा बच्चा बोलता मैं तो अनएम्प्लॉयड ही करूँ अरे क्यों जॉब दोनों से करना है फिर मम्मी को लड़की और लड़का मिलकर आए सर हम लोग एलआईसी करें वेरी गुड बेटा आप एलआईसी में जा रहे हैं नहीं सर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं है मैं 12वीं के बाद 2 साल रेस्ट करूंगा जिसको मैं एलआईसी बोलता हूँ उसको बोलता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस खाऊंगा पीऊंगा फिर सो जाओ फिर खाऊंगा फिर सो जाओ चल 12 साल मैंने किया है सर 2 साल तो बनता ही है मतलब तीसरा साल वो तो ऑटोमेटिकली आदत हो जाएगा बट इधर मम्मी ना से के बाद 12th का इंटीग्रेटेड करेंगे जेडब्ल्यू फिर और एक 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर फिर बोले ये सब पढ़ेगा कौन वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है एडमिशन तो तेरा नाम का हुआ है वही प्रॉब्लम है सर मैं तो आधा कोर्स के लिए मम्मी का नाम आधा कोर्स में पापा का नाम और तुम ये क्या होगा और क्या है ना सच अ ट्रेजेडी इट वाज मुझे याद है मेरा पापा बोलते थे मैट्रिकुलेशन होने के बाद का वो जो सर्टिफिकेट है मैट्रिकुलेशन मतलब अभी का क्या है इट इज एज इक्वल लाइक डिग्री और प्राउडली बोलता था आई एम अ मैट्रिकुलेटेड पर्सन अभी डिग्री हो गया पीएचडी हो गया क्या कर रहा डॉक्टर है जाना वैल्यू की डॉक्टर का चपरासी दिख रहा है वो लास्ट मंथ की डॉक्टर और जो कचरा वाला वो अभी पीएचडी अप्लाई मतलब ठीक है ना यार इतना एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं मतलब इज इनडायरेक्टली सही तू डॉक्टरेट कर ले तो कोई बड़ा काम नहीं किया बेचारा उसको मौका नहीं मिला है ना मोदी जी के चेहरे पे वही बैठा लेकिन मोदी जी झाड़ू मारते रहते हैं वो भी सैंपल के लिए तो दिन रात मारते है ना मोदी का भी दिन रात करते हैं ज्यादा एक्सपीरियंस है किससे मोदी जी से 4 साल से वही काम फिर
सोच ले, इसके पास 10 मोदी जी छुपा हुआ है, बस बेचारा एक मौका हाँ चाय वाला, हाँ चाय वाला तो आजकल बहुत बोलते हैं। फिर बीजेपी, ये क्या है, चाय कांग्रेस, तो ऐसा है अभी बस इलेक्शन में उतर नहीं रहा। And sorry to say that dress he wears ना every day, राहुल गांधी उसका भी खर्चा करता है, 5 लाख एक दिन का उनका कॉस्ट्यूम है। तो यार इतना महंगा चाय वाला ना जिंदगी में नहीं, ये सब तू नहीं कर रहा है, चाय वाला बोल के उसको उत्साह दे। Even the flight that he travels, you know that Air India One or Air One, it is closer to how many crores? एक घंटे का खर्चा मैंने सुना 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है उस फ्लाइट का। एक खाने का खर्चा 40,000। हाँ देखो ये भाई साहब का सारा इसको कितना फर्क है। And sorry to say, he is 74-year-old, na 74. In one day, he has covered more than 4 states for election rally. एक ही साथ। और हमारा राहुल गांधी पता नहीं कौन सा स्टेट में उधर ही जाके गड़बड़ी करके आता है। भाई साहब केरला गया है वायनाड में, जहाँ से वो गलती से इलेक्ट हो गया। अभी उधर 4 नया कैंडिडेट आ गया, सोच रहे अभी नया कोई तो केरला का बोलना पड़ेगा, उधर से वो जीत सकता है। What does it mean? We have the most promising bachelor of India. Who is he, sir? Rahul. I would have told these guys when he went to Chennai to a college called Loyola, it is a full girls college. They say ladies college, but it's students per time. तो पूरा उसका चैंटिंग हो रहा है, राहुल राहुल, ये भाई साहब तो शाहरुख से भी आगे बढ़ गए। किसी लड़की ने बोल दिया कि I heard you have a 6-pack, तुरंत and he's putting tips. यार तो पॉलिटिशियन क्या पहचान। चलो ये भी ठीक है, किसी ने उसको केरला में बोटिंग में लेके गया, बीच दरिया में लेके जाके someone have told him, sir, I heard you are an expert swimmer. कूद गया पानी में। मुझे लगता है सर किधर है, तो चल शिप लेके आ यार तो 54 इयर्स का हो गया है, अभी तो थोड़ा मैच्योरिटी लेके आ। कोई बुला दो, चाय बना दो। वो भी नहीं कर रहा है। अभी तो ट्रक वाले के साथ चल जाता है, बेचारा ट्रक वाला टेंशन में कौन बात फिर उधर तो समय मिला, फिर भैया दोबारा कभी मत आना। Look at the atrocities he is doing. फिर लोग बोलते हैं हमारा युवराज कभी पकड़े चलता है, कभी डिक्स मारता है, कभी गटर में नहीं पानी में, बट इलेक्शन में हमेशा आता है वो एक को। For last 14 times जीता, नहीं हारा है 15 times, फिर भी हारेगा। फिर भी वो लोग बोलता है फ्यूचर ऑफ इंडिया राहुल गांधी, क्यों हारने का रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। फिर वो बोलता है मोदी जी के साथ मैं शक्ति से लड़ूंगा, फिर किसी ने शक्ति कौन छोड़ना मतलब यार बोलने से पहले सोचते हुए क्या बोला, वो अगर सोचता तो थोड़ी बनती। But he's looking comedian ना, but he's a hardcore politician है भाई, वो ऐसे ही कुछ नहीं करता है। He gets money from all country. यहाँ से लंदन में जाके बोलता है कि India is not a nation, it is not a collection of state. और कोई पढ़ा लिखा इंडियन उधर तक झोंक बिड़ा राहुल गांधी से 15 मिनट्स का उसको ऐसा सुनाया ना, तो जब okay please sit down, no you listen to me, you don't know the history of India and coming to London University, उसने बहुत अच्छे से सुनाया उसको, बाकी बॉडी का sit down, no you laugh और listen down, गुड, ये भाषण में कितनी दिया। अरे तू लंदन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, इंडिया के बारे में कुछ अच्छा तो बोल, पर क्या करे, मोदी का हेटिंग में उसने पूरा दुनिया को हेट करना स्टार्ट कर दिया, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, ये सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा कॉमेडियन फ्री में कहीं भी नहीं मिलेगा। चाइना हाँ, बिकॉज़ ही इज फंडेड बाय देम। ओके चलो लेट्स प्रोसीड। Income and other goals. If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for their crops. Any other point you want me to explain? Decent wages, regular payment, and better prices to their crops. What is that price? We call it as MSP. What does MSP stand for? Minimum support. Very good. Go ahead. Or other products that they produce. In other words, they want more income. Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. आप लोग ये सब कभी सीख किया है? मैं अपना जान दे सकता हूँ किसके लिए? आजादी के लिए।
तुरंत मोदी जी का स्पीच आया, आजादी का स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं। 75 years हो गया। मेरे घर में तो आजादी नहीं है सर। हमेशा मम्मी पूछती इधर क्या कर रहे हैं? किसके साथ है? ये सब मम्मी को नहीं पूछने का। तो फिर कौन पापा? पापा तो कभी भी पूछते ही नहीं है ना। तो फ्रीडम का नोशन आपके लिए अलग है, फ्रीडम का नोशन मेरे लिए अलग है, और मम्मी पापा को तो अलग ही है क्योंकि वो देते ही नहीं है फ्रीडम। करेक्ट? चलो। There is an discrimination. हम्म। All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption. Okay. Because material goods are not all that we live. Okay. What is this word material goods means? I mean, I need a posh car. Two-wheeler to car. I need the best house in the and I need the best dresses. इसका मतलब मनीष मल्होत्रा का ड्रेस डिजाइन तो पूरा साल भर का पेमेंट वो एक ही दिन में एक चले जाएगा, है ना? So we always believe material life is not the success, but are you living a life of what? Of your dreams. देखो ड्रीम्स किसको पसंद नहीं है? हाँ सर ड्रीम्स तो है बट फुलफिल कब होगा? I don't know. Whose authority? It is you. Who is going to support your parents? Who is going to provide you government? And who is going to hard work? Your papa. बोले तू? ना। ड्रीम्स कौन पूरा करेगा? पापा। उन्हीं का ड्रीम्स मैं पूरा कर रहा हूँ, है ना? वो इंजीनियर नहीं बन पाया इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इंजीनियर बना। No sir, I am living my papa's dreams. फिर लड़के I am living my mother's dream. मेरा ड्रीम किधर गया? So it is your individuality is important. Why your individuality important? मैं पहले बोलूँगा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है तुम्हारा ड्रीम. You have to cherish your own dream. क्या पता हमारा लड़का बेस्ट स्विमर बन सकता है, या बेस्ट स्पोर्ट्समैन बन सकता है, या बेस्ट गाइड बन सकता है. But did I ask you that chance? No. I'm offering you variety of jobs in which you can select. That is all your which freedom? Intellectual freedom. What is intellectual? Which you want to pursue. Go ahead. Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. But the quality of our life also depends on non-material things. Underline the word quality of life. How do you define your quality of life? Good, best, or better? Good. Can it be made best? Yes. I mean, India, as of Prime Minister is saying, by 2047, India will become developed. He will become 77. तो ये सब क्यों कैलकुलेट कर? प्रॉमिस किया मोदी, कंप्लीट कर रहा राहुल. Is it possible? Possible. But did he give you a chance to development? Yes. If I say after 10 what are you going to do, mother and father is decided. After 12 what are you doing? You know what is my choices. So if I marked my path, I have to work hard for my path. Then only you will achieve your true development. I don't know how many of you understand the word personality development. What does the word personality stands for you? Good dress you are wearing, best schools you are studying. It is the behavior of the person. How good are you respecting the elders? How soft you are to your younger ones? How well behaved when you are given a chance that there is no teacher in the class? No sir, मैं तो bench में चढ़ जाता हूँ. बाकी लोगों को पता नहीं. I'm disciplined for. When the teacher is there, you are keeping quiet. It is okay. But in the absence of the teacher is there, because there is a subject I think अभी भी है, but for the CBSE don't give any importance. DM, disaster management. No, They removed it. But disaster management during an earthquake, during a fire alarm accident, or during a person getting a heart attack or any symptoms, how do you do? How do you rescue? अभी ये सब हमारे इंडियन स्कूल्स में नहीं है. In some schools have they check the fire alarm without you doing. Fire alarm बजते ही पब्लिक तो विंडो से कूद के बाहर निकल गया, टीचर तो पहले दम दबा के भाग गया. And फिर लोग सब जाके टेबल के नीचे छुपा, सर आग लगा है, तो कहीं नहीं लगा है, चेक करो. अच्छा, अच्छा हो गया. But if it is any foreign school, they first take the small children first.
They take the elder children late, and the teachers follow them. So this is how I say I train you for this. Fire drill. Fire drill बोलते हैं. I remember during the time of COVID, I think COVID के पहले की बात है. Suddenly one of the malls in Kharkar, our own teacher will send the photos. Terrorists have attacked the mall in Kharkar. And suddenly RPF forces आ गया, military आ गया, उसका वीडियो भी आ गया हमारे पास. फिर 2 मिनट के बाद नीचे से एक स्टेटमेंट आया, ये ओनली ड्रिल चल रहा है. अच्छा खासा पानी पूरी खा रहा था. तुरंत ही उसका मुंह पे पिक्की में पड़ा. This is not the way you do it. Wait, पानी पूरी खा के फिर बैठो. So we have to get prepared for your future. That is what these drills are for. अभी आपको अगर एग्जाम ड्रिल दिया जाएगा, अच्छा वेरी बैड कॉफी वाला, नहीं कॉफी वाला इज नॉट गुड. टीचर्स आएंगे, पेपर देंगे और आप पास करेंगे. एंड पहला हमारा पॉकेट चेक नहीं होना चाहिए. I've gone as an invigilator to different schools under my university. How do they check? The girls के लिए lady teachers है, and for boys they are picking up something from here, something from there. और फिर मेरा लड़का अभी मैं उधर बोल भी नहीं सकता. I'm the moderator there. लड़का सर एक and वो बेचारे मैडम देखे. What is the boy saying, sir? I don't know, madam. I don't know. No, he said from your college only. अच्छा, he's from my college. Now I forgot. उधर मैं कुछ कर भी नहीं सकता. क्या बोलते? क्या सर आप मॉडरेटर बन गए? कुछ भी हेल्प नहीं किया. मतलब उसी ने तुझे भेजा है and moderator please. So what does it mean? We have to tell the person during the board exam what all the strict things you have to follow. Even the pad that you are taking, even the water bottles you are taking, even everything has to be transparent. No bottle, हाँ ऐसा bottle रहेगा तो they allow you. If that metal can bottle they do not allow. अच्छा सर क्या? उसमें कुछ mix करके तो लाया रहेगा तो? हाँ it is a rule. They do not allow. All are transparent. हाँ. Even the scale, the writing pad, everything has to. Pen does. Pen में तो क्या छुपा के लेकर आए? पता नहीं सर एक पेन सर है एक जिसको एक सर चेक रहता है पानी. रुक जा मैं भी बोलता हूँ. पेन के अंदर से? हाँ वो इसके अंदर है. अच्छा. नहीं सर ऐसे निकालते हैं वो. हाँ वो ये वाले क्या? सर इसके ऊपर रूल. सो मेरे फ्रेंड के पार्टनर ने वैसे ही किया था. देखो पकड़ा कि नहीं? नहीं पकड़ा. वो मेरी फ्रेंड बाद में आके बोल रही थी कि उसने तो पूरा कॉपी किया, फ्रेंच का लेटर लिख के लाया था. और फिर सर ने तो कुछ नहीं किया. हमारे क्लास में तो ऐसा बहुत करते हैं. शार्पनर के अंदर ऐसा चिट डालते हैं और दोस्तों उसका शार्पनर दे दो. हमारे एक सेक्शन में ना 9C में ऐसे चिट्स फेंकते हैं. सर मेरे एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन साइन लैंग्वेज से कंप्लीट. चलो let's proceed. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. Yes. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured. That are not easily measured, but they mean a lot to our lives. Your friendship. I think आपको सबको मालूम. Mommy, she is my best friend. Papa, he is my best friend. बोले यार फ्रेंड होना ही मुश्किल है. ऊपर से बेस्ट क्या होता है? तो जो भी मैं गलतियां करता हूँ वो कुछ नहीं होता. But do you think that best friend is worthy of it? Maybe or may not. Why don't you make your parents as the best friend? Huh? Parents are best. Whatever I say, they don't want to listen, and whatever they say, I will never listen. तो कहाँ से best friend होगा? है ना? And ऊपर से ये gap का idea भी आ जाता है. Generation gap. उनका कोई gap. Convince your parent that whatever you are expecting from me as far as studies are concerned, I will get the best of it. But then give me little bit of space. अगर आपने मुझे freedom दिया है, उसका मैं बिल्कुल misuse नहीं करेगा. क्या करेंगे? अगर एक बार आपका मम्मी पापा उसमें convince हो जाते हैं, do you think they are going to run behind you? But then छोटा freedom क्या दिया उसका हम लोग क्या नहीं करता है ना? Both boys and girls. Then once you are caught, आप अच्छा काम भी करो उसमें भी वो 4 बार झाकेगा मम्मी. क्यों? Because you have broken the confidence of your parents.
So this word friendship is always good, but that friendship has to be in control. Control for what? Not disturbing your friends. वो कौन सा आपका फ्रेंड है जो बोलता है कि स्कूल कट करके आज आप सिनेमा जाएंगे? कौन सा आपका फ्रेंड है एग्जाम में फेल हो गया? वेरी गुड बेटा, मैं भी फेल हो गया। वो कौन सा फ्रेंड है जो बोलता है तू फर्स्ट रैंक किया? वेरी गुड, मुझे भी पता है कैसे फर्स्ट रैंक किया। That he or she is supporting you. Never have that envious habit. What is that word envy? लड़कों में तो प्रॉब्लम्स मैंने देखे ही बस नहीं वेरी गुड हमारे लड़के में देखा है कॉम्पिटिटिव एक मन करना मैं तो करूँ इधर कुछ नहीं अरे छोड़ दे एक क्या पूरा 10 लिख दिया हम बहुत दिलदार है ना so we always believe friends are those who want to push you for your life then I accept that he or she is your best friend but then they are pulling you down then I feel वो friend नहीं है और कुछ चलो However, it would be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. If you get a job in a far-off place, before accepting it, you would try to consider many factors, apart from your income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay, but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security. And if I want to explain the word job security, you ask your parent. 2 साल पहले पापा बड़ौदा में काम करते थे। उसका 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में। अभी 2 साल के बाद और कोई स्टेट में। तो ये कौन सा जॉब? है ना जहाँ भी जाते हैं आप अपना सामान बोलिए मिस्टर। पापा का ट्रांसफर जॉब। Will you like to have such jobs? Payment is very high sir. क्या है? मैं 1 साल फ्रेंडशिप बनाता हूँ दूसरा साल फ्रेंडशिप निभाने से पहले उठा के आपको स्टेटमेंट आता है I might be happy but the payment is less but for the last 15 years same area same school this is good so to understand that moment you have to understand your life with a stability what is the word stability I'm getting a job in Antarctica sir इतना मैं देखो मत सर Antarctica में कोई job चलो somewhere in Los Angeles payment is 3 times more what I get but to meet my parents in an emergency I have to wait for 2.5 days to reach my parents but then I said that same payment is offered next to Gujarat अरे सुबह निकला तो बुलेट ट्रेन भी स्टार्ट हो रहा है दोपहर I will say I'm coming soon came to मजा मना So what does it mean? The distance matters. Is it payment very important? Yeah, it is important, but इतना भी important नहीं है कि मुझे कोई अफ्रीका में डाल दे. Correct? चलो. This will reduce your sense of security and freedom. Similarly, for development, people look at a mix of goals. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Hence, the developmental goals that people have are not only about better income, but also about other important things in life. And what other important things? Can anybody tell me क्या होगा other important things? Job security, Very good. working hours, Okay, very good. What else? fixed wages. Fixed wages out there. Education, medical facilities, standard of living, your Respect environment. in the work. Can we select our neighbor whom I am living in? At least not in city like Mumbai. But in your own hometown, sir. My own relatives are my neighbors. Okay? ऐसे ही रहता है. I reach to my hometown midnight 12:30. Example, मैं जाता नहीं. Within half an hour, all of my relatives have joined there. 5 बजे तक मुझे सोना है तो छोड़ो. बैठ के बात करने बोलते. इधर मैं कल रात को 2 बजे आऊं या आज रात को 3 बजे निकलूं कोई कुत्ता भी नहीं पूछता क्यों वो भी अपना दिन बिजी रहता है हाँ सर फ्लैट सिस्टम है सर एवरीथिंग इज क्लोज बट देयर एक छोटा प्रॉब्लम होने तो एक आवाज लगा 10 लोग आके आपको खड़े हो जाते हैं दैट टाइप ऑफ सिक्योरिटी आई डू नॉट हैव इन सिटी
अभी सिटी में वैसे ही हो गया है. We don't want to poke our nose into other person's family. But उधर देखो कुछ नहीं. छोटा भी एक आवाज लगाओ, 4 दिन तो आपके साथ ही रहता है. So that kind of security I will not give. So am I ready to lose such a place where my family and friends are there? No. Am I want to stay in a place where besides me no Indian is living? No. But payment के लिए जाना पड़ता है. Then I always have something called as home sickness. You guys have any time heard? The first visit of me out of my parents was somewhere in a country which was more than 18 hours flight from India. पहला 2 महीने तो बहुत खुश था. I'm living in a very posh city of the world. तीसरा महीने वो बड़ा था उसका बहुत याद आता. चौथा महीने we are ready to eat. फिर हमारा बस में चक्का, ट्रेन में क्या, उधर सब decently लाइन में आता था decently. ये लाइफ में मजा नहीं है ना. फिर when I'm calling my parents, बेटा फोन रखना अभी सोने का टाइम. क्या? इधर सुबह 8 बजे हो, इधर 9 बजे फोन रख. When I'm traveling there, they ask me how many miles away. What does it mean? Kilometers? No, they are only miles. अगर मैं अपना दिल्ली से बाहर उतर के किसी को पूछूं ये बिल्डिंग कहाँ है, वो 10 बार बोलेगा. यहाँ से लेफ्ट मार और एक राइट मार और एक लेफ्ट मार, उसके आगे फिर मारते मिल जाएगा. मेरे एग्जांपल उधर मैंने गलती से पूछा, सर आई एम गोइंग टू दिस बुलावायो. व्हाट इज दैट? बिल्डिंग द बुलावायो. एंड फर्स्ट थिंग, आर यू न्यू टू द सिटी? Do you use GPS? Yes, switch it on and go. ये तो फिर भी ठीक है. बस वाले से अगर मैंने पूछ लिया, बस में चढ़ते हैं उधर तो टिकट लेते नहीं है. I have a card, tap it. I want to reach this place. See this behind. Sir, I am new to the place. Go and sit. उसने बोला, I will tell you the stuff. ठीक है, अभी उतना तो उतर गया. उतरते समय सर this place. Google it. अभी अपना बीएसटी वाले से पूछ लो, बैठ जाते हैं. ऐसा हेल्पिंग बाहर नहीं मिलता है. I remember going to my college somewhere in Dadar. I used to take a local train. मुझे अभी भी याद है लोकल ट्रेन में कभी अंदर दूसरा कभी बैठ जाता हूँ. I do not aim to stand out. मतलब हमारा पूरा कॉलेज का ग्रुप ट्रेन पकड़. एक दो बार तो मैंने ट्रेन पकड़ लिया. मालूम पड़ा बॉडी लटक रहा है प्लेटफॉर्म खत्म. And some young or new people किधर लटक रहा है, ऊपर आ जा. हाँ खिलाफ है तो उधर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं. 2 ट्रैक खुलता है. One is the outside gate and another is the inner gate. उधर मस्ती किया ना, उधर ही पुलिस लेके लेके 2 ट्रेन. चल कहीं टूटते नहीं है, कभी ये नहीं करते हैं. है ना, हमारा इंडिया तो ओपन है. इधर ओपन अपनी जगह जाकर. So we always believe the life really changes, the opportunity knocks, but then you want to station at a place because you feel homely. I don't want what? Homesickness. फिर मेरे बहुत सारे फैमिली में स्टूडेंट्स, lovely यार, you are living in a place where snowfall. हाँ lovely. Are you enjoying? मैं मर रहा हूँ. क्या बोला? Enjoying भी आता. And what is the temperature? -10. Wow, wow. -9 इधर तो 34 चल रहा है. मतलब उधर ही आ गई मुझे, है ना. Next 6 months I cannot see the sunlight. कितना बढ़िया. मतलब आके देखो, इंजेक्शन से पहले भी ना विटामिन डी का कैप्सूल्स की. अरे वाह. अरे भाई मरेगा तो मालूम पड़ेगा, है ना. And heater is there all throughout the life. Even in the washroom also without heater it is hot water. क्या facility है. $100 देता हूँ, इतना तो देना ही पड़ेगा, है ना. फ्रिज दिया है, माइक्रोवेव सब दिया है. पर क्या करें मजबूरी. But then Mumbai का lifestyle I cannot tolerate. Why? Homesickness नहीं है. So we always believe, however is the salary, but we want a better lifestyle in which you and me feel that it is me. उधर जाके इतना सारा citizen के बीच में it is not me, it is I only walk. Me नहीं बोल सकता. Correct? Let's proceed. National development. अच्छा, I'll give it to him. Okay, come on, you start. Where is he reading? Good. I knew it that you were not focusing. जल्दी. एक मिनट देखने दो. National development. Aditya. As we have been seen above individuals,
seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourselves on what India should do for development. Most likely, you will find that different students in class have given different answers to our questions. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of this. It is very important to keep in mind that different persons will have different as well as conflicting notions of country development. What is the meaning of the conflicting? The like na different. Different. Next. However, can all the ideas be considered equally important, or if there are conflicts, how does one decide? What will be fair and just path for all? We all have to think whether there is a better way of doing things. Will the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. Next. How to compare different countries or states? You might ask if the development can mean different things. How come some countries are generally called developed and others underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. When we compare different things, they will have similarities as well as differences, which aspects Aspires. Aspect. Like very simple. He's confusing the words. There are three words. है ना? ये है ना spelling? ये. I guess we Except, है ना? Let us have a tongue twister. Already मेरा tongue already twisted. This is accept. Except. This is aspect. Pressure इधर है ना? So now he has read is this, I think. Am I correct? So I think it is pressure is here. Phonetics na? Aspect. Accept. The way you pronounce your tongue, the differentiation starts. Philip. Which aspects do we use to compare them? Then let us look at the students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talents, and interests. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent student may be the friendliest one. So how do we compare students? So you can. Tell me the word. Spelling. CRIT. Yes. Criterion. Okay, what is the criterion of the measurement? Scale. How do I measure that my students are all best? He might be best in study. She might be best in behavior. Some might be best in something else. But are they best? Yes. Can I say all are best in all things? Then it's not possible. And everyone has their own individuality. How do you define our individuality? And I don't want to change that individuality also. I can enrich. What is enrich? Add करो. नहीं तुझे ये subject में इतना है. It is not possible. Whatever his or her understanding, they will get it. But we can enrich. Go ahead. We may use depends on the purpose of comparison. We use different criterion to choose a sport team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Okay. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for all-round progress of children in the class, how shall we do it? Usually, we take one or more important characteristics of person and Characteristics. The reading is too good. and compare them based on the characteristics of the of course. There can be difference about what are important characteristics that should. Oh, characteristics. Improve your reading. Next person. This is true development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Countries with higher income are more developed than others with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income.
So greater income itself is considered to be one of the important. Now, what is the income of a country? Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country? Hence, we compare the average income, which is the total population. The average income is also called per capita income. In World Development Reports brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying countries. Countries with per capita income of US dollars 12.0 annum and above in 2017 are called rich countries, and those with per capita income of US dollars 955 or less are called low income countries. No, but when I define a country, whether it is developed or developing or underdeveloped, you might ask me, sir, on what basis are you saying? Can I say on basis of education? Maybe. Can I say on the basis of national income? Maybe. But I always feel a common man in India is having all the facilities. I said no. Then it is not a development. An average American has more than 2 cars in his house. An average Indian, more than a bicycle. Maybe or may not. In America also they have beggars. In India also we have beggars. Can I say the beggar in America is far better than the beggar in India? Also America. I personally have seen they wear the best blazer or a jacket, the best guitar, 2 speakers, and they keep on playing in the downtown, and people throw $1 and $2 or $5. Can you imagine our दो कुछ तो लेता है सर आज मैं समझ आता है ट्रेन तो 1 लाख रुपया देगा वो 10 लाख हमारा बच्चा तुरंत से ले एक किधर है 10 लाख वो गाना गाता रहता है. So every country with a development, we cannot say that it is a true development. But now only I was reading the blogs of Saudi Arabia. What about Saudi Arabia? Oil rich country. But with the rate of EVs coming in, with the rate of hydrogen and other cars coming in, a Muslim dominated country called Abu Dhabi, UAE, has allowed, not allowed, the biggest temple in one of the islands of Abu Dhabi. You know that? Yes. Now they are following the model of Modi ji only. और 10 साल के बाद उनका पेट्रोल का बिजनेस बंद. फिर बोलता है बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा विजिटर इस टेंपल के लिए आएगा. Look at the amount of thinking that person is doing. सर हमारा ये जो राम टेंपल जो खुला है ना सर, वो खराब है. नहीं है अभी है मेरा चालू कर रहा है. तो किया भी. सर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ. So we always believe this Ram temple which has just opened now after 500 years of clashes. It is 500 years. And they say that within 2 years it might be the richest than the Vatican City of Rome. उससे भी ज़्यादा income ये राम लल्ला देगा. Not true. The sword which is in his hand, the gold sword, is done by one of the Rashi jewelers. Rashi का कोई ज्वेलर नहीं किया. मुझे एक दिन में minimum 5 से 25 करोड़ का इनकम होता है. और क्या तुरंत कांग्रेस ने बोल दिया लोग राम को भी बेच के कमा तो रहा है ना कुछ कर उसमें. And sorry to say, already Radisson Hotel is established, the 5-star, and more 5-star hotels already started booking. The airport is one of the best, they say. Train school गया है. अब हम बोलते हैं कि उधर इतना सारा होटल स्टार्ट हुआ है जो हर रोज कितने सारे गरीब नहीं जो भी आता फ्री में खाना पड़ता है उधर 1 रुपया नहीं लेते. राम हमेशा बोलता है राम राज्य हाँ गया राम राज्य. Today I had a small RSS meeting just opposite to my building in Palm Beach. So I have seen RSS meet, मतलब public बोलते ये आतंकवादी है, मतलब कोई आतंकवादी नहीं है. They are teaching how you love your country,
Many non-Hindu people are involved into it. But a politician mind में डाल दिया RSS मतलब. In fact, many people say Hindu is not a religion; it is a way of life. Because हमारा जो blood है ना, we are all from a community called Hindu Kush Mountains. वहां से हम लोग सप्त सिंधु के रहने वाले हैं. सिंधु जब स से ह हटा तो हम हिंदू बने. जब मुगल राजा हमारे ऊपर अटैक करने लगे, then we told we are Hindus. तब मालूम नहीं था कि ये religion बने. Are we fighting today in the name of Hindu, Muslim, Sikh, Israel? Yes. All politician का creation, but reality में zero. No other religion in the world is as old as ours, Sanatan. They say it is close to 7,500 old in history. I don't want to challenge any other religion. They say they are just for 1,500 years old only. But हमारा जब भगवत गीता लिखा गया था, भगवत गीता is not for any one religion. It is for all. अगर आपने कभी भगवत गीता हाथ में भी लिया रहेगा ना, उसमें यही लिखा है how you become a disciplined person. बस अभी कुछ स्कूल में जब योगा सिखाया जाता है तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं नो दे आर टीचिंग रिलीजियस. अरे बुद्धू योगासन इज फॉर बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड ओनली, है ना? टाइम चलो चलो खत्म करते हैं. टाइम है almost 1 hour 6:20. 25 it goes ना 20 after कर you leave. अच्छा he's ready. Because its per capita income in 2017 was just US dollars 1,820. So when I want to rate my country, it is per capita income. Please put that word in your notebook. Next time when we are meeting, I'll complete this chapter. Please bring geography as well. Next time, huh? You write this word in your notebook. Oh, notebook. Per capita income. Total national income. Total national income. TCI बोलते हैं per capita income. Total national income divided by total population of the country calculated during one financial year. Total national income of the country divided by the total population of the country during one financial year. मतलब एक इंडियन को कितना इनकम मिलता है, that is per capita.